वो indivisible होते हैं, means you cannot break them, which can't be created or destroyed in a chemical reactions. Okay, आप जिसको क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। ओनली एटम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एटम्स जो हैं वो ब्रेक नहीं हो सकते, but their bonds can be broken. Like for example, H2, दो hydrogen के atoms हैं, they are chemically they are combined together. So when you are reacting two hydrogen atoms and four hydrogens, two molecules of hydrogen atoms means H2 and one molecule of oxygen atoms, they combine together. Their bonds will break, and then new bonds are formed, representing the two water molecules like this. So this type of breaking of bonds between the two atoms does not mean that the atoms are broken. Atoms will be broken when they are broken into electrons, protons, and neutrons. But I am marking my points that atoms are every matter is made up of very small particles called atoms, and these are indivisible particles. Atoms just are indivisible particles which can't be destroyed or created in a chemical reaction. It is absolutely correct. यू कैन नॉट क्रिएट एन एटम, बट यहां तक अगर हम लोग ले लें कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, या एटम्स इज इंडिविजुअल, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग जितना अंडरलाइन किया है दैट एटम्स इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स, सो यहाँ पर इतना स्टेटमेंट उसका गलत हो जाएगा कि एटम को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में ब्रेक कर सकते हैं, बट लेकिन वी कैन नॉट ब्रेक देम इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। हम उनको न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। ओके, समझ आया? समझ आया? Yes. Yeah. नोट इट डाउन फास्ट। All of them or only the point that you just explained? व्हाट आर यू सेइंग? Am I supposed to write down all of them or only the point that you just explained? You have to start writing this one, the postulates of dynamic theory, and write up to here. And this postulate proves that proves the law of conservation of mass. So the question will come that which postulate of dynamic theory proves that the law of conservation of mass. So law of conservation of mass, it means that atoms can neither be created nor destroyed. So if the total number of atoms on the reactant side are equal to the product sides, they are not being created nor destroyed. So the mass will also be equal because the matter is not destroyed, so the mass will not be destroyed. So same, this is the postulate that simply we can say that this is applicable for the law of conservation of mass. Means this postulates of Dalton proves the law of conservation of mass. Okay, समझ आया? Yes. Note it down. Wait, are we also supposed to draw the diagram that you do on the side of hydrogen and oxygen? What are you saying? Are we also supposed to draw the You can draw it. molecules You can or draw it. whatever that you drew on the You side? can Okay. draw it.
Done? Yeah. Yes, sir. Yes, Next, sir. next one is atoms of an elements are identicals. That is important. You have to concentrate here. He said that atoms of an elements are identical. Means all the atoms of an elements are identical. And means they are identical in mass. Means they have same mass and chemical properties. Means they have same chemical properties and same mass. But all the elements of a same all the atoms of same element, like for example, if you take the atoms of iron, so irrespective from where you have taken the iron, they will form same chemical, they will show same chemical properties, but they can have different masses because of extra neutron. Actually the electron participate in the chemical bonds. मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा ध्यान से, इसको समझ लो, कोशिश करो समझने की. ओके, so what I am saying, तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ. So I'm saying, I'm trying to say that if you have atoms, okay, so their electron participate in the bonding, like you have an hydrogen atoms. So hydrogen atoms can be one with let's suppose I'm drawing this one as a nucleus. Nucleus is not so big, but I'm drawing. Just imagine, and this is the one electron. But this nucleus can have only one proton, that is called protium. Protium. Another type of hydrogen atom is which is having one proton and one neutron in the nucleus, one proton and one neutron in the nucleus. It means it will have mass 2, means 2 unit mass, 2 U mass. It will have only 1 unit mass. One proton plus one neutron means double. One before this one number is, that's why it is 2. It is having 1 U mass. And second, the third type of isotopes present is one proton and 2 neutron. It is also hydrogen. Similarly, for the carbon also, carbon has 4 electrons in its outermost shell. 1, 2 in the first shell. That you will learn what is shell, what is this electrons, you will learn. But I'm just trying to explain that carbon has this. And one type of carbon is having 6 proton and 6 neutron. Okay, that's why it will have 12 mass. 12 mass. उसका 12 mass होगा. Okay, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Wait, are we supposed to draw this? So अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में फंसे हुए. तो आई एम जस्ट मेकिंग अ मतलब बिगर साइज बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि होता है बिगर साइज, सेम साइज होता है. But it is having 6 proton and 6 neutrons. So it is having 14 mass. 14 mass. And it is having 12 mass. 12. So, but still they are having same chemical properties because the electrons are responsible during up for making a bond. So these, the electron, only the electron of the outermost shell, not the inner shell. These will not participate. They will not participate. These will not participate. Only these electrons will participate in the bond. The outermost shell electron. The last shell electron, you can see. So these will participate and they are having 4 electrons, so they will show same properties. So that's why we'll say that either the carbon is having 14 mass or the another atoms of carbon is having 12 mass. They still shows same chemical bond. Okay. So mass is not responsible for the chemical properties. Like nitrogen, if I am talking about the nitrogen atom, nitrogen have
two electron in the first shell, and then 1, 2, 3, 4, 5. 5 electron in the second shell. Okay, and it has in 7 proton and 7 neutron. It will be more clear when we'll study the structure of atom. Don't worry about it. So both they are having 7 protons, 7 neutrons, so 7 plus 7 is 14 mass. So the mass of carbon can also be 14, the nitrogen can also be 14. But you see that carbon is solid, nitrogen is a gas. Nitrogen, carbon don't show the same chemical properties. Okay. Because why? Because it is having 5 electron. 1, 2, 3, 4, 5 electron in it. समझ आया? समझ आया? Yes, sir. तो इसलिए हम बोलेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. गॉट इट? सो इसको लिखना शुरू करो. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? कि इम्पोर्टेंट चीज ये है जो मुझे समझानी थी मेन. वो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से यहाँ तक बात सेम नहीं. एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास. नो, दे कैन हैव, कार्बन कैन हैव 12 mass, carbon can have 14 mass, but they have same chemical properties. It is correct. Carbon 12 and carbon 14, they both well, means carbon 12 means the one carbon which is having 12 mass, and another carbon atom which is having 14 mass. So that's name is carbon 12 and carbon 14. They both are same mass, sorry, different mass. They are having different mass. One is 12 and 14. But they still show same chemical properties because they are having same atomic number. That you will learn that what is atomic number means the number of electron present in an atom, that is 6 in both. So that is called, so the actually the electrons are responsible, that is both are having 6, that's why they will show definitely same chemical properties. Even though if I'm talking about the nitrogen having 14 mass and it is having 7 atomic number. So this carbon and nitrogen will show different chemical properties, even though they have same mass. So we'll say that mass is not responsible. And okay, and this type of atoms that are having same atomic number but different mass, same atomic number but different mass, they are called isotopes. आइसोटोप्स विल लर्न. आइसोटोप्स क्या होते हैं अभी लिखेंगे बाद में, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए फिलहाल. अभी आइसोटोप्स मींस मास सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास. सो इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास मींस यहाँ पर ये स्टेटमेंट इतना गलत हो गया था. और फिर उसने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट मास. डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी. तो ये बात तो सही है कि दे विल हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. इतनी तो बात बिल्कुल सही. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट they will be a different element means different chemical properties like nitrogen and carbon, but they can even have the same mass. Carbon, nitrogen have same mass, so it is saying different mass. तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़. Means like argon has mass 40. Argon is a noble gas which is having atomic number 18, and calcium is also having mass 40 but it is atomic number is 20. So atomic number different है तो chemical properties different too, but their masses are still same, 40 and 40. So we can say that there are many atoms that can have the same chemical, same masses, but they are different chemical properties होती है. तो different chemical properties वाला statement सही है, but इतना ये गलत हो जाए कि ये statement गलत हो जाए. फिर उसने कहा था कि atoms combine in a ratio of small whole number to form compounds. ये सबसे बढ़िया बात थी. उसने कहा था कि एटम जो है एक स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करता है टू फॉर्म कंपाउंड. इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी. और यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो करता है. यानी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द एटम्स के कौन से उससे आपने एटम्स को लिया है, ठीक है, अगर हम बात करें तो, बट दे विल बियर द सेम केमिकल. समझ आया? Yes, एंड Yes, sir. विल बी ज्वाइनिंग, दे विल बी ज्वाइनिंग इन द सेम इशू. यानी कि वाटर, इफ इट इज वाटर, इफ यू आर टेकिंग वाटर, so there will be always two hydrogen and one oxygen atoms. So they will combine in a fixed ratio, that is two hydrogen one oxygen. ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर दूसरी जगह से नाले का पानी लोगे तो 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन मिलेंगे. तो ऐसा नहीं है. एंड रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. ये भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को स्लो करता है. ओके, सो ये दोनों पोस्टुलेट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको नोट डाउन करिए फटाफट से. All of them, right? जी, All of the points. all the points. Yes, you have to write all the points.
Done, sir. I'm done. Done everyone? और बच्चों को Yes, लिखना sir. छागरिका, you done? Yes. Tanisha, you also done? Yes, sir. Still writing. No, sir. Done. Okay, चलिए. अब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डायनामिक थ्योरी. अरे ड्रॉबैक्स तो आया नहीं. चलिए अभी मैं दिखाता हूँ ड्रॉबैक्स ऑफ डायनामिक थ्योरी. ये क्या है? Only atoms in molecule PPT questions की बोल दिया अभी मैं डॉक्यूमेंट्स में 9 को. Drawbacks saying he said that atom is indivisible, but atoms can be divided into subatomic particles like electron, proton, and neutrons during nuclear reactions. I'm talking about during nuclear reactions. So during nuclear reaction में तो law of conservation of mass भी valid नहीं. He said that different elements must have different mass. Different element must have different mass. But in case of isobars, isobars कौन से होते हैं? जिनका मास सेम होता है और केमिकल एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. तो अभी ये चीज क्या है आइसोबार उसको छोड़ दो. बस याद रखोगे इन केस ऑफ आइसोबार like argon 40 and calcium 40, this statement does not hold true. Hold true, okay? Yes, sir. Note it down. And he said that same element will possess same masses, but in case of isotopes, it is also not true.
Done. Done. Done, everyone. No, sir. Noted down, class. बेटा हो जाए तो मुझे बता देना, ओके? When you done, please let me know. I'm done. Everyone, सबने कर लिया? Yes. Is there still anyone who's still writing? No. The No, next sir. next drawback was that, okay, this we have done. He said that atom is indivisible, but atoms. Law of conservation of mass state that mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. Its total mass before and after the chemical reaction is conserved. Okay. ये हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में. Write down this question. Calculate the amount of hydrogen required to complete 84 grams of nitrogen to form ammonia gas. Calculate the amount of hydrogen required to completely react with 84 grams of nitrogen to form ammonia gas if the nitrogen and hydrogen ratio in ammonia is 14:3. जल्दी लिखो फटाफट से. When you're done, please let me know. जल्दी करो फटाफट से. Sir, is it 18 gram? No. 84 grams. 18 grams you are saying?
Yes. Yes, it is correct. So it is asking for the react with 84 grams of nitrogen. So N2 plus H2 will gives you 2NH3, and 2 plus 3H2 will gives you 2NH3. The simplest ratio is 14:3 of grams. Okay. So it is asking for the hydrogens. So you will simply write X here and you will write 84 here. And then you can write X upon 3, and this upon this should be equal to 84 upon 14. Okay. Now you cut it 18, 14 6 are 84, and then you multiply this one, you will get 6 3 are 18. So 18 is the correct options. Those who have not done this, they can do it like this way. जल्दी से कर लो. You done? No. Yes, sir. Do it faster. Yeah, I'm done. Next, do this one. Calculate the amount of oxygen required to completely react 4.5 grams of carbon to form carbon dioxide if it is simplest ratio is 3:8. Famous.
So what is after carbon dioxide? What are you saying? What is after carbon dioxide? If the simplest ratio, you have calculate the amount of oxygen required to completely react with 4.5 grams of carbon to form carbon dioxide. Uh, if the simplest ratio, so you have to find out the mass of carbon. Sorry, Okay. oxygen. Yes. 4.5 grams of calculate the amount of oxygen required. बहुत आसान है, जल्दी से करो, बताओ कितना आंसर आएगा। Sir, is it 12? 12 gram? Yeah, it's 1 gram. Done. Yeah. Yes. Yes. Sir. Next is this one. नहीं, अगर किसी से हुआ तो देख लो भाई, क्योंकि उसके बाद टफ आने वाले क्वेश्चन। 3 by 4.5 you will write. When you cut it, you remove the I remove the decimal. I write 4.5 upon 3 x upon 8. Then I remove the decimal, it becomes 30 by adding 0 here. So divided by 15, 15 2 the 15 3 the 45. 3 by 2. Then I cut, I bring this 8 to this side. 8 by 2, you can cut it 4, 8 to 1 the 2 4 the, then multiply you get 12. So please let me know. Done. Yes. Sir. Next question. अब इसमें दोनों दे रखा है, इसमें लिमिटिंग रेजेंट वाला काम आएगा, ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में समझाया था। सो फटाफट से calculate the amount of nitrogen gas formed, and you have 25 grams of hydrogen and 109 grams of 109 gram of I'm just writing here 109 109 gram of hydrogens, sorry, 25 grams of hydrogens you have, and 109 grams of nitrogen. The ratio of the hydrogen oxygen is 4:3। जल्दी बताइए फटाफट से कैसे हुआ और कितना आंसर आएगा और कैसे आप इसको फटाफट से बताओ, क्योंकि आप दोनों चीजें दे रखी हैं, तो इसमें कोई एक, क्योंकि 14/3 इज नॉट इक्वल, मतलब 109/25 इज नॉट इक्वल टू 14/3। सो इट मीन्स रेशियो मेंटेन नहीं है, तो इसका मतलब है कि there might be something in the excess region, okay?
यू डन। पहले बताओ उसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद दिस वन जो पहले खत्म हो जाएगा। तो हियर यू विल गेट 337 327 something and 25 fours are 25 14 are 250 plus fours are 100। 25 टेंजा तो होता है 250 और 25 फोर्जा होता है 100। विल गेट 350 है, तो 350 आपको इधर मिलेगा। तो आई टोल्ड यू कि जिस तरफ ज्यादा होता है ना उसी तरफ वही लिमिटिंग वेरिएंट होता है, यानी कि हमारे पास जो ज्यादा होता है ना वही लिमिटिंग वेरिएंट। उधर 327 है एंड तो ये लिमिटिंग वेरिएंट। तो जो ज्यादा पहले वही लिमिटिंग वही पहले खत्म हो जाएगा, यानी 109 हमारे पास पहले खत्म हो जाएगा, ये लिमिटिंग वेरिएंट है। तो फिर जब ये लिमिटिंग वेरिएंट होता है ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 109 ग्राम पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर 25 ग्राम ये एक्स्ट्रा है, अगर ये लिमिटिंग रेंज तो ये एक्स्ट्रा, इसका मतलब 25 फॉर 109 ग्राम वी रिक्वायर लेस अमाउंट, 25 ग्राम से कम चाहिए। तो कितना चाहिए उसके लिए हम लोग एक्स लिख लेते हैं। देन व्हाट वी विल डू सिंपली वही जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, x/3 और 109/14 व्हेन यू डू इट। तो आप देखोगे कि अरे, कितना गया। आप देखोगे कि हम्म, अच्छा मैंने किया ही नहीं। चलो तो अभी हम लोग यही पे कर लेते हैं। यू विल राइट 14 109 and x, sorry, 3 by x, 3 by x. So you multiply this one, you will get x by 3 would be equals to 109/14। when you cut it you will get, कट तो नहीं कर सकते इसको 109/14, so इसको ऐसे हम इसको 3 को उधर ले जाएंगे, you will write x is equals to 109 into 3/14। so 109 into 3 by 10, 327 divided by 14। So 327 divided by 14, you will get 23.35। When you cut it all, you will get x as 23.35। So actually 109 gram of nitrogen के लिए we require 23.35 grams of hydrogen। लेकिन थी कितनी हमारे पास, we were having 25, तो उसमें से 1 ग्राम एंड 165 ग्राम्स बची रह जाए, 23.35। सो दोनों को मिला करके उतनी तो अमोनिया बनी, क्योंकि ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा और हाइड्रोजन इसने 109 ग्राम नाइट्रोजन के लिए भी रिक्वायर ओनली दिस मच, तो इतने ग्राम हमारे पास अमोनिया बनेगा। और एक्सेस रीजन जो है वो 25 में से 1.65 ग्राम्स मतलब हाइड्रोजन वो बची रह गए। समझ आया। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। यू कैन कॉपी दिस वन फ्रॉम हियर एंड देन यू कैन राइट इट फर्दर, एक्स वाले निकालने के बाद फिर फर्दर आप लिख सकते हो। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट से। I'm done. डन एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ओके सो दैट्स ऑल फॉर जस्ट अभी वी आर हैविंग 4 मिनट्स। ये वाला भी लिख लो कि अमोनिया फाउंड विल बी दिस वन।
Okay, we start. No, sir, wait, I'm not done. Okay, writing still. I'm done. Done, everyone? Yes, sir. Yeah. Okay. चलो ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसे घर से करके डाल लिख लो, नोट करो इसे फटाफट से, इसे होमवर्क में करके डाल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड व्हेन 10 kg of hydrogen gas react with 50 kg of nitrogen. The ratio of hydrogen to nitrogen is 3:40. जल्दी से लिखो इसे फटाफट।